गूस के प्लूरल को कहते हैं गीस। ये है अपना चैप्टर नंबर 30। So let's start it. The corpse is on that hill. Found it. जवाब चारो। और ये जॉनी के हाथ में क्या है? अच्छा नहीं, ये इसका हाथी है जिसके अंदर एक और हाथ है। Scary Monsters Part 3. Somewhere on the island of Britain, in an impoverished region, among impoverished people in a rural village, were two parents of a newborn baby. तो अब मुझे लगता है डीओ की हमें बैक स्टोरी मिलेगी। They became so weary of their poverty-stricken lives that one night they went into this mountain and dug a hole. They wrapped the baby in white cloth and placed him in the hole shed. They finished the job and carried on with their lives as if the child were never born. तो डीओ पैदा होते ही abandon हो गया था? कुछ तो हुआ। But a little while later, it started to rain. The water in the river increased and started to flood. और क्या हुआ? ये लोग देख रहे हैं कि अपने बच्चे को जैसे छोड़ के जा रहे थे और ये बच्चा बह रहा है और डूब रहा है। Diego, you had a name for that child. Don't. He mustn't have died. Sorry, he must have died a long time ago. Once we have a stable life, we can have as many babies as we want. We'll have another baby someday. That one died in the flood, okay? We were wrong. We were wrong. I don't need money. If you would just quit your drinking. What? How dare you scorn your husband like that? और ये मारा मुक्का। Shit भाई, यहाँ तो डोमेस्टिक अब्यूज चल रहा है। Diego, Dio, Dio, दिया। ओके, और ये भी डूब रही है उसके साथ साथ। She is drowning, that stupid woman. Ha! Now I got rid of both of them. Good riddance. और ये अपने बच्चे को बचा के डूब रही। आ, ooh, he's alive. Oh child, with such power of life. I'm sorry, I'm sorry. I won't ever do it again. Thank you, Lord. Thank you. After the rain stopped, the mother and the child were found unconscious down the river by a man who was employed at a farm. The woman changed her surname to Brando and began to do work for the farm. तो इनका नाम भी ब्रांडो था नहीं, तो ऊपर नाम दे रखा है, क्या फर्क पड़ता है? डिएगो है ना, बस इतना काफी है। Diego Brando had turned 5. At that time, he was taking care of the horses, but their lives of poverty did not improve a bit. Did you grow thinner? Here, eat my portion too. I'm already full. I just grew taller. I haven't gotten skinny. They worked from dusk to dawn and were only given a place to sleep, eating utensils and barely any food. There was no place else they could go. Stop, please, please don't. Stop it. What is it? I like you. Come on, just a little bit. It's been 5 years now. Is this how you treat the person you owe your life to? I'm really grateful, but please stop. If my son finds out that I'm having a relationship with you, a married man with children, what would he think? You were right. I was mistaken. I must have misunderstood. I'm truly sorry. Uh, there's a hole in my cup? Yours too, mother. Why? Who did this? Gather around, everybody. Time for your meal lineup. और इस हमने कप डाला, इसके कप में से गिर गया। Oh no, lad. There's a hole in your cup there. What a waste. One person's worth was spilled. Now I can't give you the nice warm stew. And these utensils are the landlord's. We need you to be careful, don't we? Somebody put holes in our cup. It wasn't me or my mother. Oh, really? Who in the world did it? Be sure to tell me if you find who did it, young lad. Maybe just borrow a couple of cups, me and my son. We cannot eat without them. All right. But since you broke the landlord's utensils, you must buy new ones. £3. I don't have that much now. Once I receive my salary, I can pay you back. Well, we've known each other for 5 years or so. Maybe we can work this out. Advances aren't permitted here. I'm deeply sorry. But oh yes, in here we could have the stew in here. Even just one person's worth. Don't be a fool, boy. That's the animal's pail. The cows and sheep don't want the smell of gravy in their bucket. Sorry, could you move aside? Everyone else is waiting in the line.
Mother, I'm not even hungry anyways. But I just thought of something terrific. We've got our shoes. We can put pour our soup in there. और इसकी मम्मी ने इसको तमाचा मारा. वो हाँ, और इसको तमाचा मार के वहां चली गई और अपने आ, यार इतनी सैड स्टोरी किसी की नहीं होनी चाहिए. प्लीज, could I have some stew inside these hands? Will you please pour the stew, Dio's portion, or go ahead right here in these hands? और इसने ले लिया और इसके हाथ जल रहे हैं. Stop. Thank you very much, mother. Now I've gotten some. Go on and eat, dear. Mother, let go. Hurry, I'm not hungry. No matter how poor people are, we cannot forget our dignity. What about tomorrow and the next day and the next day? Eat this and grow big and strong so that you can grow up and protect your mother. Wow. We can buy new cups next month, but until then, go on and eat this. Oh. Diego Brando's mother continued to work and work. A year later, she caught a disease called tetanus and died at the young age of 23. यार, इतनी sad story. Do you believe that the germs that came in through her burns were the cause of her disease, and intuitively knew that the man was the cause of her death? As Dio grew older, he swore to himself to find that man and get revenge. And all of you at the farm who looked down on us just because it wasn't clear who my father was, you all abandoned my mother. You disposed of us both and my father. God knows where he is, and the owner of the farm. I'll never forgive any of you. You're all guilty. Bloody country fucks. I'll climb to the top of the society. If anyone gets in my way, I'll put them through humiliation. Worse than getting stew in their shoes. I'll slash through their pride and scatter it on the ground. Before taking her last breath, Dio's mother said to him, Don't be sad. It's all because of my sin. It's not your fault. But Dio, even the untamable horses on this farm listen to you when you come near and eat from your hand. You should try riding them when you grow a little older. That's your talent. Okay, the glory of the steel ball run race. It has the power to influence even the royal family of England. Any means will be taken to meet that end. Uh-oh. अच्छा ये आवाज निकालो. वाह वाह, दोनों डायनासोर रेडी हैं. Go Johnny go. Dio is back. Go deeper. Go to the, क्या लिखा है ये? तो मेरे हिसाब से ये जो पैनल है ना, ये पैनल नीचे कंटिन्यू हो रहे हैं दोनों. और यहाँ पे ये आया, ये ड्रेनेज पाइप में ये अपना मुंह डाल रहा है. नो, गो टू द अदर साइड थ्रू द सुएज. ये क्या लिखा है यार? ये क्या 50-50 का रखा है मेरे सामने? न्यू, क्या बाघा. What is this? Dio's ability. That bear he killed. Even the bear became a dinosaur. Who knows? Hurry up and go deeper. तो ये अभी भी डायनासोर इनको परेशान कर रहे हैं और ये और नीचे जाना चाह रहे हैं. That rocky hill at the Big Dipper is on the cliff across canyon. I'm guessing the corpse is somewhere in the dent of the peak. It's only probably about 200 or 300-meter climb. After we get down from here, we'll climb down the cliff and up the canyon in the dark. Right, we'll get the corpse from the mountain and then get out of here. But Jairo, what about our horses? The horses, they'll be eaten by Dio. No, he wouldn't do that. Dio's goal is to get your left hand and our lives. Besides, a guy like him who's made his life as a jockey wouldn't kill a horse. Valkyrie will come find us in the morning. I sure hope so. Russell. क्या हुआ? ये छोटे छोटे डायनासोर आ गए अंदर. Hey, what the hell? Some small ones came in. Dinosaurs. Even though they are small, they're still dinosaurs. Dio must have sent them in. और ये इनको, अच्छा जॉनी ने फिर अपना शूट किया अपने पैरों के नाखून, टस्क अपने स्टैंड से, और ये जाके इन पर अटैक हुआ. They have the same dynamic vision. My tusk won't hit them at all.
ये कैसे सुसु करती? वो इट पिस्ड ऑन मी। अरे यार इतने छोटे हैं क्या? शिट। और आ रहे हैं। देयर इज मोर कमिंग। इट्स द स्मेल। दे आर कमिंग आफ्टर द स्मेल ऑफ देयर ओन पिस। अच्छा तो इन्होंने स्मेल से मार्क कर दिया, तो जारो ने अपनी बॉल फेंकी, ये क्रश हो गया डायनासोर। और ये असल में चूहा निकला। माइस। They're back to normal after dropping dead. These small dinosaurs was just sewer mice. Russell, Russell, Russell. Johnny, hurry, get out of the water. Get out of the gutter. The next bunch is coming. There will send more mice. Cling onto a rock in the shadow and be still. We need to finish this before climbing down the canyon. और ये जॉनी उतर रहा है, अचानक से चौका पीछे देखा, कुछ तो हो रहा है। What are you doing? Go down the rocks. No, Gyro, we can go. Down the cliff. There's no way we are going to cross the canyon and get to the hill. क्योंकि नीचे से और डायनासोर आ रहे हैं। ये कैसे डायनासोर है? और जॉनी जारो नीचे देखते हैं कि सारे टाइप के डायनासोर आ रहे हैं। ये तो लोग हैं, ये कपड़े वपड़े पहन रखे हैं। We are surrounded. Those are the villagers. They've already been turned into dinosaurs. They're effortlessly climbing up the cliff, up the cliff from right to left. Dio's ability turns everything in this village, human and animal, into dinosaurs and puts them under his rule. ओहो, तो स्केरी मॉन्स्टर स्टैंड का ये है। और ये ऊपर देखता है और ये एकदम मस्त तरीके से खड़ा है डियो। जारो ने देखा, डियो इज कमिंग फ्रॉम अबव। डोंट पैनिक, नो मैटर हाउ मेनी देयर आर, एज लॉन्ग एज वी डोंट मूव दे विल नेवर बी एबल टू सी अस। But Gyro, if Dio's purpose is to side all of the villagers with himself and to take my left arm, the dinosaur infection will spread, even through a scratch caused by Dio's claws. Even through a small scratch, the infection will spread. और ये देखते हैं, ओ जॉनी की गर्दन ऐसे स्केल्स टाइप की बन गई है। हाँ, तो जॉनी ऑलरेडी, ओ डी, ये अपना जैरो भी टर्न हो रहा है। इन पे ऑलरेडी इन्फेक्शन आ चुका है। इट्स हैपनिंग टू मी टू। Dio was holding down your neck with the and arm with his feet back in the hut. It was only a scratch, small scratch, but he did wound you, both you and me. We've already been infected. We are going to turn into dinosaurs. और ये जायरो के मुंह पे ये क्रैक्स आने शुरू हो गए। You have to be kidding. How much longer do you think we'll last? Until we turn into dinosaurs. We won't last. We probably won't last 3 minutes. Guessing from what happened with the bear at the hut, there's no more time. What do we do? This situation. Should we cut off your left arm and hand it over and beg for our lives? Or can we defeat Dio quick enough? Defeat the root cause within 3 minutes. और वो उधर देखता है जॉनी वापस कॉन्स्टलेशन की तरफ, और ये सब अटैक करने आ रहे कूद कूद के। Dio unleashed more of those mice. ये कहीं जाने की जगह नहीं। Don't move, Johnny. Don't move, no matter what. Just ignore those for now. Don't you get it? We have their piss on us. That's what they're after. Their arm is fixed. Their aim is fixed. और ये आया. Dio is trying to find our exact position with those small ones. और ये सब आ रहे हैं. We need to fight or we'll be killed. We need to finish them now. No, Johnny, there is one more thing we have to do. What we need to accomplish in the next 3 minutes is to get the holy corpse across that cliff. The progression of our wounds is getting slower. The scales on your left arm are fading away. I'm the only one turning into a dinosaur. It must be because you have that corpse part in your left hand. Oh, the holy power of the corpse is fighting the infection. If we get the next corpse part on the rocky hill, then we can negotiate my infection too. We can negate my infection too. शाह, और ये डायनासोर अभी भी आ रहे हैं। ये पिछले 4-5 पैनल से बस आ ही रहे हैं, आए नहीं है। और ये आ गए, अटैक करने लगे। डियो को पता लग गया कहाँ है। They found us, Gyro. I said ignore them, Johnny. Face this way. See now, there's an opening to the canyon.
हियर वी गो, जंप ऑफ जॉनी, व्हाट, रन, और ये कूद गए नीचे, गो जॉनी गो गो, और ये कूदे, डायनासोर इनके पीछे आ रहे हैं। होली शी, नाइस, होली शिट रेफरेंस। और ये कूद रहे हैं, अभी भी गिर रहे हैं, और जायरो नीचे देख के खुश हो रहा है, इसके पीछे आ रहे हैं काटने के लिए, और ये दोनों गिरे, लेकिन जायरो अपना हाथ रेडी कर रहा है, ये काटने वाला है जॉनी को, और ये जायरो ने अपनी स्टील बॉल रेडी की। व्हाट आर वी डूइंग, देयर इज नो वे वी कैन जंप अक्रॉस, इट्स टू फार, और ये इसने फेंका, पेड़ को लगी, और क्योंकि ये स्पिन की वजह से सब कुछ हो सकता है, तो ये पेड़ बहुत सारे पार्ट्स में बट गया, और ये सब पार्ट्स अब टेक्निकली समझ लो कि आर्म्स की तरह जायरो के कंट्रोल में होंगे, क्योंकि वो स्पिन के हिसाब से इनको कंट्रोल कर सकता है। मतलब कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होंगे, जायरो ने पहले ही डिसाइड करके स्पिन दे के फेंका है, तो जिस भी तरह का उसने स्पिन दिया था वैसे ही एक्ट करेंगे। एग्जैक्टली, देयर इज नो वे टू जंप अक्रॉस फॉर देम अनलेस दियो इज अ डायनासोर विद विंग्स, दैट इज pterodactyl, हो भी सकता है भाई। And I don't see any of those here. Grab onto the tree bark that I shaved off with my steel ball. और ट्री बार्क की जगह उसने जायरो को ही पकड़ लिया, और ये डायनासोर गिर गया नीचे जो उनके पीछे आ रहा था, विलेजर वाला। लेकिन एक सेकंड, तो विलेजर है तो मर गया फिर नीचे गया तो, भागा। और ये लोग नीचे से फिर ऊपर, नहीं ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और ये लटके हुए हैं दूसरी सामने वाली क्लिफ। ही इज हैविंग देम कम आफ्टर अस अगेन, they are going to try and get here by climbing up from below. Forget Dio. Even if they are dinosaurs, it will take them a few minutes to get here. Anyway, I guess we weren't wrong to assume that it was there. It was here. We were right. इस हमने हाथ डाला सैंड में, जॉनी ने, और छोटे छोटे कंकड़ आए, और ऊपर क्लिफ का शेप ऐसा है, जॉनी बैठ के देख रहा है। The sand on the ground is moving from the bottom. What kind of principle is this coming up from below? Isn't it because it's reacting to your left arm? The corpse is responding to another part of the corpse. They're calling each other because you came close. If this is the same as that time in the second stage, then it's very close for real. तो वो जो palm, devil's palm, शायद इनके पास मूव कर रहा है. The position of the rocks, it's like a palm. द डेविल्स पाम, अच्छा तो ये अंगूठा है और ये सब उंगलियां हैं, इसीलिए डेविल्स पाम। वेयर इज इट, वेयर इज द नेक्स्ट कॉर्प्स पार्ट बरीड, क्लाइंब अप जॉनी। ओ तेरी, ये तो ऑलमोस्ट पूरा डायनासोर बन गया है। माय बॉडी इज गेटिंग वर्स, लेट्स हरी अप एंड फाइंड इट एंड गेट द हेल ऑफ दिस माउंटेन। भा, और ये जा रहे हैं। डियो देख के सरप्राइज हो रहा है। जॉनी खुद को सैंड में कवर कर लिया, और जायरो तो बन ही गया ऑलमोस्ट, और इस सैंड में कवर्ड जॉनी जा रहा है। ये जॉनी है कि क्या है? जॉनी है ना? जॉनी नहीं है, ये कोई और है, कुछ और है ये। एक सेकेंड, ध्यान से देखने दो मुझे। जायरो इधर है, उसके पीछे कुछ है रेत में कवर्ड। ये रेत में कवर्ड जो चीज है, इसके ये चश्मे, ये स्टैंड है क्या किसी का? इसका हाथ है? मुझे सच्ची में नहीं पता क्या। जायरो लुक अबव, अबव यू, व्हाट इज दैट? जायरो देखता है। No, I thought it was a statue, but that's not a statue. It's hollow beneath the sand. It's only sand covering a hollow shape. It's a shape of energy, a stand, the shape of a stand. तो ये एक stand है. There's something in the part shaped like a hand. It has something in its hand. That's where it hiding something. Oh man, it's I taking over my mind. Those are corpse parts. The next corpse parts are the eyes. अच्छा तो इसके हाथों में अब आंखें हैं। नेक्स्ट कॉपर, इनसाइड द हैंड्स आर बोथ आईज। गेट देम, आई एम जस्ट अबाउट टू बिकम अ डायनासोर, बट वी विन जॉनी, इफ दे आर देयर यू गो एंड गेट देम। और ये डियो को गुस्सा आया, डियो ने अपने ही बनाए हुए डायनासोर को मारा और फेंक दिया। हाँ, डायनासोर भी कह रहा है, हाँ मेरे को फेंक दिया, मैं तो तेरी टीम में था। और गिरे। जॉनी, आई कैन सी दिस क्लियरली, Dio just knocked two of his dinosaur friends off the cliff. He jumped off. ओके, तो डियो इनके पास जल्दी से आना चाह रहा है।
ये क्या, इसने अपने ही बंदे को फेंका? ये फेंकते ही जा रहा है। क्या चल रहा है, डियो अपने लोगों को फेंकते जा रहा है। और आ गया, ऑलमोस्ट पहुंच भी गया। आ गया वो जस्ट। हाँ। नो, डियो टुक दी आइज। टर्ब, क्या लिखा है, TCRB। तो आइज अब डियो के पास है। चारों देख रहा है। जॉनी भी सीरियस है। सारे लोग बन चुके हैं और डायनासोर बन चुके हैं और चैप्टर खत्म हो गया है यहाँ पे क्लिफ हैंगर पे, लिटरली क्लिफ हैंगर पे, क्योंकि